Assalamualaikum, myself Ahmad Khan, roll number 2076, and I am going to show you the task 1, which is intercontext. Intercontext of digital signal processing. We have to tell which is digital term it is mean, its essence and intersexes. So its essence is like it uses sampling and quantization, which is useful feature in digital signals, due to which we can get a value of signal at every point, and its essence that due to that we can calculate at every instant the value of a signal, and it changes. And then the second point is linear search and binary search. Linear search can be applied to any change, whether any data, whether it is sorted or not, and binary search apply only in the sorted data, and the simplification is like that in linear search it require a time for data to be searched, and in binary it is easy to search data. Then the DSP and sorting. DSP data is in the form that we can search it easily, and sorting is the same, and by choosing the network in which we can access the data easily. And now the last task is the theoretical form, is that in the domain of debate strategy, and so I show you the some strategies which I think: compression, error correction, detection, parallel transmission, caching, factorization, prioritization, duplication, protocol optimization, bandwidth management, parallelization of tasks. These strategies are used in the enhancement of data transmission. We perform task number 4, where we start with the CLC command, which is used when we don't want to, if we run the program multiple times and don't want the output to be in the same phase, to be in that place, for the first time when we run the program. So that's why we use CLC command. We have given the time from 0 to 1 interval with a gap of 0.01. F is equal to 1 and signal is equal to sine f multiplied by 2 by t. And now we plot the graph between time and signal. So when we plot the graph, we will get the sinusoidal, as you can see that we will get the sinusoidal output with the highest value of 1, which we have given, in which we have given the frequency, and it goes with the task number 4. Now we go to task number 5, in which we start with the same CLT, time, frequency, signal, but the different in this task is that now we will give the title to the graph, x-axis, y-axis, and we will define the axis in it. So so, so in this program, we will give the title of the graph: plot of sine wave of 1 hertz. Y label is equal to amplitude, and x label is time in seconds, and x, we have defined the x-axis is from minus 0.5 to 1.5, and y-axis is from minus 1.5 to 1.5. Positive 1. So when we run this program, we will get the graph of in which we have time axis from minus 0.5 to 1.5, and y-axis is from minus 1.5 to positive 1 point, and we have plot the graph. And here you can see that as we use the sine function, so we use it, we will get a sinusoidal graph, and it comes. Now we will come to task number 6, in which we will plot the multiple functions. So as in the previous two, we plot only one function, but in this we will plot two functions. So as we start with the same CLC, time, frequency. First frequency value we have given 10, and second frequency value we have given 520. Signal 1 is equal to sine, same function we use, and signal 2, as we use same function with the reference of f1 and f2, and plot these two functions. Here I plot only one function, but if we want, we can plot the two functions. And I entered f signal 1, TV signal 1, and TV signal 2. Now plotting multiple signals, same frequency, title, y label, amplitude, x label, and we define 0 to 1 x-axis minus 1 to 1 y-axis. And when we run this program, we will get, as you can see, the output.
of as we have plotted two signals, so the output is like complex, but as you can see that there are two colors, red color and blue color. Red color shows the first signal and second blue color shows the second signal. And in this way we plot the multiple signals with the x-axis 0 and to 1 and y-axis minus 1 to 1. So here is the task number 6 finish, and now task number 7, in which we have to plot again the multiple signals, what with the dot. As you can see that in the previous task we plot the signals by using the lines, but in this we plot the signals with the dots. The same CLC time F1 F2 signal 1 with the same function and plotting with dot. As you can see here, we will use dot. The hold on key, and then after that we will plot signal 2 with the same R dot and hold off key, and then sound signal to 16,000 hertz key title available, and we have as defined axis 0 to 1 and minus 1 to 1. When we run this program, as you can see that there's the sound is come, which we have given 16,000, which we have given 16,000, and the red dot is of first signal and the blue dot is of second signal, as you can see that. So plotting without connecting dots is also done, and this is our task number 7. And task number 7 also include one thing in which we have to name the script. As you can see, I have named script only untitled with a different name, but in this task we have to name the script, so I named it with plot trend, and we use the CLC कमांड जिसमें हमने वही अगेन सीएचसी से स्टार्ट किया है ना, हमने 50 दिया हुआ, और अब रैंडम वैल्यू लेंगे एन के, एन में 50 में से कोई भी आनी, हम कोई रैंडम वैल्यू लेंगे और उसको प्लॉट करवाएंगे, और फिर हमने उसी रैंडम वैल्यू जो हमने सिलेक्ट की है उसका हमने मीन निकालना है, और फिर वहीं हम रुकेंगे, और फिर उसके बाद प्लॉट करवा देना हमने ज़ीरो को, और उस रैंडम वैल्यू एन जो हमने 50 ली हुई है, एंड जो हमने 50 ली और एम को, यानी जो इसके मीन है उसको हमने प्लॉट करवा देना है, यहाँ पे रुक जाना है, और इसको हम टाइटल देंगे मीन ऑफ रैंडम यूनिफॉर्म डाटा, और फिर जब हम इसको रन करवाते हैं तो फिर हमारे पास इस तरह का ग्राफ शो होता है। अब ये ग्राफ हमारे पास इसलिए इस तरह का शो है क्योंकि ये एक सिग्नल की रैंडम वैल्यूज प्लॉट हुई हुई है, नॉट के स्पेसिफिक वन जहाँ पे प्लॉट हुई हुई है, ये सिर्फ रैंडम वैल्यूज प्लॉट हुई, इसलिए हमारे पास ग्राफ इस तरह का शो हो रहा है। अब यहाँ पर हम आते हैं अगले फंक्शन पे। अब यहाँ पे जो हमारे पास चीज़ शुरू हो रही है वो ये हो रही है कि हमने अब एक फंक्शन बनाना है। अब एक फंक्शन बनाने के लिए हमारे पास सिंपल ये होता है कि हम एक फंक्शन की कमांड यूज़ करते हैं, और उसको हमने जिस टाइप का भी फंक्शन बनाना होता है हम उसको उसका नाम दे देते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने माई मिनिमम फंक्शन बनाना है, तो हमने एम इज इक्वल टू माई मिनिमम के कर दिया। अब एम इज इक्वल टू एक्स वन, हमने एक्स को एक इनिशियल वैल्यू वन दे दी। हमने एक लूप लगा दिए कि फॉर लूप, जिस के अगर आई की लेंथ, तो अगर आई इज इक्वल टू टू रेशियो लेंथ एक्स के होगा, तो एक्स आई, अगर एक्स आई लेस देन एम है तो एम इज इक्वल टू एक्स आई होगा एंड। अब ये हमने किस लिए किया है, ये हमने किया है मिनिमम के लिए। अब और इसी के चलो हम प्लॉट करवाते हैं कि यहाँ पर हमने एक फंक्शन लिया हुआ है एक्स के नाम से, और अगर हम अब इसका प्लॉट करवाएं एम मिन, तो हम इसको रन करवाते हैं। इसको रन करवा रहे हैं तो हमारे पास शो हो गया 1। अब क्योंकि इस पूरे में हमारे पास 1 एक छोटी वैल्यू थी, तो इसलिए हमारे पास ये 1 प्लॉट हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास एम मिनिमम का फंक्शन बन गया। सिमिलरली इस तरह हम एम मैक्स का करेंगे, बस फ़र्क ये आएगा कि वहाँ पे लेस का साइन था तो यहाँ पे ग्रेटर का साइन होगा, और यहाँ पे हम एम मैक्स का फंक्शन डालते हैं। सब मैंने एक ही फंक्शन में किए क्योंकि ताकि हमें एक से ही समझ आ जाए कि किस किस तरह ही परफॉर्म हो रहा है। तो हमने मैक्स का किया तो 9। अब हमारे पास इनमें 9 सबसे ग्रेटर वैल्यू थी, तो हमारे पास 9 प्लॉट हो गया। इसी तरीके से अब हम करेंगे माई एवरेज को। एवरेज के लिए भी सेम ये हमारे पास है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि एवरेज हमने फंक्शन प्लॉट बनाया एवरेज का, उसको एवीजी नाम देके माई एवरेज एक्स कर दिया, एन को हमने लेंथ एक्स कर दिए कि हमारे पास जितनी लेंथ होगी वो, और ऐसे हमारे पास सम हो, तो हमें एवरेज पता है, एवरेज हमारे पास होता है सम ओवर टोटल, यानी जितनी टर्म्स होती है उनका टोटल के साथ डिवाइड कर देते हैं सम करके। तो हमने इसी तरीके ऐसे ओवर एन कर दिया। अब इसी का हम अगर निकालें माई एवरेज,
ये आप देख रहे हैं कि मैं एवरेज का फंक्शन डाल रही हूँ। तो AVE तो फिर अगर हम इसको प्लॉट करवाते हैं हम, तो हमारे पास ये शो हो जाता है, इसकी एवरेज हमारे पास निकल रही है 5। ये आपके पास यहाँ पे शो हो रही है। इसी तरीके से अब हम इसका अगर हम करते हैं, एवरेज तक हमने कर लिया सॉर्टिंग का। तो सॉर्टिंग में हमारे पास है एफ सॉर्टेड, एम आई सॉर्ट के नाम से हमने करते हैं। तो सॉर्टेड इज इक्वल टू सॉर्ट एट, तो हमने इसका एक फंक्शन बना दिया। अब हम इसको करते हैं और अब इसमें हम अप्लाई करते हैं इसी जो हमारे पास बना हुआ है, इसको हम इसमें अप्लाई करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो इसको हमने अप्लाई किया है, तो हमारे पास आ गई है सॉर्टेड डाटा 1 से लेकर 9 तक असेंडिंग ऑर्डर में। और सिमिलरली अब इसके बाद हम माई रिवर्स वाला अप्लाई करेंगे। माई रिवर्स के लिए हमने एक फंक्शन बना दी, क्यू इज इक्वल टू माई रिवर्स एक्स, और इसको हमने कर दिया नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना चाहिए। इस फंक्शन को हमने इस तरीके से बना दिया। अब इस फंक्शन को अगर हम प्लॉट करवाएं, तो हमारे पास हो जाएगा क्यू, हमने इसको नाम दिया हुआ था उधर, तो क्यू ले लेंगे। तो क्यू इज इक्वल टू माई रिवर्स एक्स, को हमने कर दिया इसके नाम एक्स, माई रिवर्स एक्स। और अब हम इसको रन करवाएंगे तो हमारे पास उल्टा प्लॉट हो गया 9 से लेकर 3 तक। यानी पहले हमारे पास जब हमने सॉर्ट किया था तो हमारे पास 30 में प्लॉट हुआ था। अब हमारे पास जिस तरीके से हमने इसका फंक्शन का वो बनाया था, फंक्शन बनाया था, उसको उल्टे तरीके से ये प्लॉट हो गया। तो फिर इसके बाद जो अगला हमारे पास है, वो है हमारे पास, उसमें हमने ये करना है कि हमारे पास हमने एक टाइम दिया हुआ 0.5 तक का, 0.01 के गैप के साथ। एक्स हमने कहा है रैंडम वैल्यू 50 और 1 में से कोई भी चूज हो सकती है। वाई का हमने साइन का फंक्शन लगा दिए 10 इंटू 2 पाई एफ एफ, यानी एफ की वैल्यू जो हमने यहाँ पे दी हुई है वो 10 दी हुई है। अब हमने सब प्लॉट करवाए हैं दो। एक हमने एक्स का प्लॉट करवाया है 1 और 2, जो हमारे पास होता है 1 है हमारे पास नंबर ऑफ रोज और 2 है हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स। और इसी तरीके से 1 और 2 जो तीसरा वो पोर्शन पे 1 और 2 हमारे पास लिखे हुए हैं, वो हमारे पास होते हैं नंबर ऑफ प्लॉट्स के। ये पहला प्लॉट है, ये दूसरा प्लॉट है। वाई हमने वो यूज़ किया है। और अब हम इसको अगर हम प्लॉट करवाते हैं तो हमारे पास ये इस तरीके से एक ग्राफ शो कर देते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है 1/2 का ग्राफ हमने हमारे पास शो कर दिया है। इसी तरीके से अब हमने लास्ट टास्क की तरफ जाते हैं, जो कि था जिसमें हमने विन 4 की फाइल बनानी थी और हमने कोई भी चार तरह की मैट्रिक्स प्लॉट करवानी थी। तो हमने वही और उसका फंक्शन बनाना था, तो हमने फंक्शन बनाया विन 4। और फिगर्स हमने डालनी थी, तो फिगर वाला डाला, फिर सब प्लॉट किए। तो मैंने यहाँ पे 4 2/2 के सब प्लॉट्स प्लॉट करवाए हैं। तो फिर अगर हम इनको रन करवाएं तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास 4 2/2 के सब प्लॉट हो गए हैं। तो अब इसमें सिंपली हमारे पास अभी कोई खाली इसलिए हमें शो हो रहा है क्योंकि इसमें हमने कोई सिग्नल नहीं प्लॉट किया हुआ। तो जब हम इसमें कोई सिग्नल की वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास ये सिग्नल्स में भी प्लॉटिंग शो करेगा। तो यहाँ पे हमारे सारे टास्क एंड होते हैं। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।